बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर 1117। आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड क्लास 11 के लिए 2025 एग्ज़ाम्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने पूरा साल मेहनत नहीं की उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत अहम हैं। अगर वो इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कर लें तो वो मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए हम चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट चैप्टर इज यूनिट नंबर 1 इज कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना सबसे पहले आना चाहिए कि आपने किस तरह रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को डिफाइन करना है। इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज simplify 1 plus iota raised to power 8 using थ्योरम को यूज़ करके आपने इसको सिंप्लीफाई करना है 1 plus iota raised to power 8. So this is the most important question for the complex number. Now next chapter, that is unit number 2, matrices and determinants. सो अगर आपने जस्ट इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। सो क्वेश्चन इज सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस using matrix invariant method or matrix inverse method, and equations are in the form of two variables. Then x plus 2y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 4. Now these are the most important questions from the chapter 1 complex number and chapter 2 matrices and determinants. Now the next chapter that is most important is vectors. And question from this is like SLA based question. Question is prove that the diagonals of a parallelogram bisect each other using vectors. So इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं वेक्टर्स में से आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज Unit 4, that is sequence and series. And the question related to this chapter is Find the sum of
10 terms of the geometric progression 2, 4, 18 and up to so on. इस टाइप की आपके पास सीक्वेंस हो और आपने सम फाइंड आउट करना हो फर्स्ट 10 टर्म्स का, तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। So the next chapter is polynomial functions. So question like this: solve the equation you have to solve the equation using factor theorem. You will apply factor theorem on this equation, that is x cube minus 6x square plus 11x minus 6 is equal to 0. So इस इक्वेशन पे आप फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ मैनी 5-digit numbers can be formed using digits 1 to 9 without repeating. So this type of questions आपके परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर में से आ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मैथमेटिकल इंडक्शन। सो मैथमेटिकल इंडक्शन में से आपने प्रूव करना होगा फॉर n इज इक्वल टू 1, देन सपोज फॉर n इज इक्वल टू k इज ट्रू एंड यू हैव टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. सो क्वेश्चन इज प्रूव दैट by using mathematical induction one plus 2 plus 3 plus n is equal to n into n plus 1 by 2. So you have to prove by mathematical induction. Next, बाइनोमियल थ्योरम से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। सो बाइनोमियल थ्योरम में question like this: find the
middle term in the expansion of expansion of 2x minus 1 over x पावर 8। सो इस टाइप के क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम में से आ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे कि उसमें से किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में से आ सकता है। सो फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस आपके लिए होंगे लाइक कन्वर्ट 225 डिग्री इनटू रेडियन, radians and find its reference angle। Now the next chapter is trigonometric function, that is the last chapter। और इसमें से क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है स्केच द ग्राफ y is equal to 2 into sin of x on the interval of 0 and 2 pi। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए अवेलेबल है फेडरल बोर्ड क्लास 11 के लिए जो मॉडल पेपर गिवन है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो इस चैनल पर आपको मिलेगा, जिसमें MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। सो रिवीजन में आप उसको भी शामिल करें, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर चैनल को स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए 1 शॉट कोर्सेज लेकर आएंगे कंप्लीट बुक के, और हर चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन आपके लिए होगा। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।